everyone, this is Shivani Sinha and I am here with a new topic of data communication and networking. So, in data communication and networking, we have already studied about how data communicate with one system to another, what is signal, what is data, and all. So, in this chapter, we are going to study about the data modulation. That what do you mean by modulation and how it works in communication and communication establishment. So, concept of data modulation is very important. Modulation is a fundamental requirement of the communication. Okay, so modulation is a fundamental requirement of the communication system. Modulation can be described as modulation in the addition of information to an electronic or optical signal carrier. Okay, so it is the process by which the characteristics of one signal is varied in proportion to the information contained in another signal. समझ में आ रहा है मॉड्यूलेशन क्या होता है? It is a conversion of binary data or a low pass analog signal to a band pass analog signal. देखो क्या होता है मॉड्यूलेशन, जब भी हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ना, तो ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, राइट. सो इंफॉर्मेशन को ऐड करना है उसे, मे बी वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो या फिर ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू कैरी करता रहे, हमारा इंफॉर्मेशन कैरी हो, उसकी थ्रू हम प्रोसेस करवाते हैं. एंड जैसे बाइनरी कन्वर्जन होता है हमारे सिग्नल्स में, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो एनालॉग, दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है, right. So conversion of binary data and low pass analog systems, analog to a band pass analog signal, all these things comes under this concept of modulation. Okay, so modulation can be described as modulation in the addition of information. We are adding an information, okay, to an electronic or optical signal carrier. We are adding information to the electronic signal or optical signal carrier. This is the process by which characteristics of one signal is varied in proportion to the information contained to the another signal. Okay, so now we can see that there is a types of modulation like analog to analog modulation, digital to analog modulation, and the third one is analog to digital modulation. So first of all, what do you mean by analog to analog modulation? And one thing I want to say that the diagram is very important in data communication networking subject. We have to draw a diagram, neat and clean diagram in our examination paper. Okay. So analog to analog modulation and represents the analog information by an analog signal. ओके, वी हैव द इंफॉर्मेशन इन एज एन एनालॉग. हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा, एक इंफॉर्मेशन होगा जो एनालॉग इंफॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू वो पास रिप्रेजेंट कराना है, एक एनालॉग सिग्नल के थ्रू प्रेजेंट कराना है. द नीड ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इज दैट इफ द मीडियम इज बैंड पास in nature or if only a band pass channel is available to us. मतलब कि इसका मीडियम जो है, ये नीड इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो मीडियम है वो बैंड पास का नेचर का हो या फिर बैंड पास चैनल अवेलेबल हमारे पास हो. तो क्या होगा, वो एनालॉग से एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही हम एनालॉग इंफॉर्मेशन को पास करवा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन. Analog is converting to the analog, conversion is processing in the middle, and after that the analog signals are represented like this waves. Okay, so there are three types of analog to analog modulation, that is AM, FM and PM. That is amplitude modulation, FM means frequency modulation, and PM means phase modulation. By amplitude modulation क्या होता है? So in AM, that is amplitude modulation, frequency division modulation, each conversion is shifted to a different part of the frequency spectrum by using a high frequency waveform to carry each individual speech signal. Okay,
सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ईच कन्वर्जन इज शिफ्टेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हर एक फ्रीक्वेंसी के अलग अलग स्पेक्ट्रम में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं टू कैरी, और एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ होते हैं हर एक सिग्नल, हर एक इंडिविजुअल सिग्नल को कैरी करने के लिए, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. So another method of superimposing information signal to the carrier signal is frequency modulation. So in how we superimpose our information signal to a carrier signal for the entire process, we have another modulation named frequency modulation, in which modulating signal varies the frequency of a कैरियर वेव. इसमें क्या होता है कि सिग्नल, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कैरियर वेव से थोड़ा सा अलग रहेगा, मतलब थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है, सेम नहीं होगा. एंड द थर्ड वन इज पल्स मॉड्यूलेशन. अब पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक तरह का मॉड्यूलेशन का फॉर्म है जो कि पल्स के थ्रू, पल्स जैसे हमारे चलते हैं उसी के जैसा ये यूज़ होता है. जैसे हम डायरेक्ट डायग्राम आप लोगों को शो करेंगे, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो पल्स मॉड्यूलेशन and is a that form of modulation in which the duration of a pulse is varied in accordance with the same characteristic of modulating signal. So these are the AM, FM and PM definitions. Now we see the diagram. AM. Okay, so in AM what we have, pulse frequency division modulation. Each conversion is shifted to a different part of the frequency spectrum. So first one is modulating signal, that is audio. Okay, it is an analog signal. Then carrier signal is like this, the second one, and AM signal is like this. Okay, so everyone is having their carrier signal is taking the information signal in with them and with a frequency wave to carry. These are having a frequency wave to carry these signals. In FM we see the difference. Okay, so first of all is the modulating signal, that is an audio, then the carrier signal, and in FM we have the frequency wise, and okay, so we have the frequency are there in the third thing, that is a FM signal. And in PM the modulating and carrier signals are same, but the result is the pulses are different. Okay, so what we have studied, the pulse modulation, amplitude modulation is that form of modulation in which duration of pulse is varied in accordance with some characteristics of modulating signal. So these variations which we are seeing in this diagram, these are coming through the variations of the modulating signals. ठीक है, variation of the pulses are there. So after that analog to analog modulation, we have read about the AM, FM and PM. Okay, all three of these are important, and then these diagrams are also very important. So now we are going to study about digital to analog modulation. Okay, first we have studied about the analog to analog modulation, and now it is digital to analog modulation. So the aim of digital modulation is to transfer a digital bit stream over an analog bandpass channel. Okay, so the main aim of digital modulation is what? It is to transfer a digital bit stream over an analog bandpass channel. For example, over the public switch telephone network or over a limited radio frequency band. These are the examples of digital modulation. ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन के हैं. जैसे हमारा फ़ोन होता है, स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, वैसे ही हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो लिमिटेशन होता है, ये सारे हमारे रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में. सो इन डिजिटल मॉड्यूलेशन एन एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड बाय अ डिस्क्रीट सिग्नल. तो क्या होगा,
डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे, एनालॉग कैरियर सिग्नल जो हैं वो मॉड्यूलेट करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल से। डिस्क्रीट क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं। जैसे डायग्राम नीचे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किसे डिस्क्रीट सिग्नल कह रहे हैं। So digital modulation method can be considered as digital to analog conversion. Okay, so here in digital to analog modulation, digital waves are just converting their signals to analog signal. Okay, for passing the information, and the corresponding demodulation or detection as analog to digital conversion. And when and digital to analog, digital waves have to should convert in the form of analog signals, and and when the analog signals convert into digital signal, then it is called demodulation. So modulation and demodulations are different one. So see this diagram. The first one is digital signal. Okay, so digital signal is like this 0 1 0 1 0 1, and after and conversion we have this result like an analog signals. We have the waves of analog signals. So this is a digital to analog modulation. It also have four parts like ASK, FSK, PSK and QAM. ASK means amplitude shift key. Okay, so FSK is frequency shift key, PSK is phase shift key. It is not pulse, it is a phase shift key. QAM is quadrature amplitude modulation. So these are the four types of modulation of digital to analog modulation. And in analog to digital modulation, the diagram is given there. See, and whatever we have written in the digital to analog, the vice versa, the opposite of that is analog to digital modulation. If you have any doubt, then you can ask me इन अ कमेंट सेक्शन। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं। तो फिर यही डिफरेंस है एनालॉग, डिजिटल एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन में। डायग्राम मस्ट है, यू ऑल हैव टू ड्रॉ डायग्राम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। ओके देन, थैंक यू।